Rising water level in Odisha's Baitarani River has triggered a danger signal, putting Bhadrak district on high alert. Continuous rainfall, fueled by a low-pressure system, has led to significant surges in river levels across the state. At Akwapada Anikut, the Baitarani River has reached the critical danger mark of 18.33 meters. Bhadrak collector, Dilip Rautre, has warned that a major flood could hit the Baitarani River basin. The district administration is on high alert and fully prepared to manage any emergency situation. Dhamnagar and Bhandaripokhari blocks are likely to be the worst affected. Response to nodal officers have been deployed to oversee vulnerable areas. Residents are being cautioned, and schools have been instructed to stay open for emergency shelter use if needed. ODRAF teams are on standby, ready to respond immediately if the situation worsens. With floodwaters rising, Chanbali, Dhamnagar, and Bhandaripokhari blocks remain at high risk. बैतरणी रिवर सिस्टम रे आम एक्सपेक्ट करूँ मॉडरेट टू हाई फ्लड आसीपे जो मॉडरेट टू हाई जो फ्लड आसो से आम लोक मानू सचेतन करके स्पेशली दुईटी ब्लॉक भंडारीपोखरी और धामनगर एवं जो जो पंचायत गुड़िक अफेक्टेड होबार संभावना अच्छी से अंचल आम माइक माध्यम लोक को सचेतन करूँ एवं लोक मानू स्कूल को एवं फ्लड सेल्टर्स और साइक्लोन सेल्टर्स मानू इवाक्युएट करूँ। बर्तमान स्थिति जहाँ अच्छी आम ओड्राफ टीम नियोजित करूँ तेणु मुझे आशा करुच्ची जो फ्लड एक्सपेक्टेड अच्छी ताहा आम विल बी एबल टू मैनेज। थैंक यू।